Very good morning with Farzana Ali and Nazneen Anwar. She's CEO and she's editor-in-chief to Neeshat publications. She is not only editor-in-chief, she's an author, she's a writer, she's art lover. Welcome Nazneen to 101. Oh, thank you so much, Farzana. It's lovely meeting you and it's my pleasure. It's likewise. Nazneen, आज की conversation हम start करेंगे with your personal journey. All right, so I started my journey when I decided to quit my job as I was working as legal counsel at an MNC, and then I quit that job. It was quite lovely job, but I decided to do some other more important work. Actually, the background is that my husband had a business with his family, and due to some reason he had to wind up with that family business, and he is basically expert in marketing and sales, but he could not produce something. He could not make a product to sell, so that was the point when I decided that there's no point in working something else and ignoring my husband who wants something bigger than that. That's great. So Nazneen, यहाँ मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे आपने बोला कि yes, your journey started and you decided to came to the business when you quit your job, and that was quite a good job that you're doing. So let me just ask you, this Nazneen who's sitting as a CEO of some publication house, was she always wanted to be a CEO or editor-in-chief, or there was some other ambition that she was born with? Well, by birth, I'm an art lover. I did my first graduation at BSc Home Economics, and I used to love painting. I used to love making rugs, and I am very passionate for art and craft. I'm also into poetry. I'm an art lover. So I started my professional life as a interior designer. I used to decor offices with glass paintings and all that. But then I don't know why, I just realized while working with some NGOs, I just realized that having a law background would be more beneficial for me to serve the community. So that is my passion, to serve community. And I started studying after having 2 kids, and I was quite busy at the house, a busy mom, but then I started studying LLB from University of London, and then I did my LLM from University of London with the specialization in international human rights law. And I have also attained certification of international environmental law and natural resources reservation. Nazneen, since while discussion of what I have noticed that Nazneen have a very rich academic background. She did some degrees in laws. She was a passionate art lover, but she's doing entirely a different job. Yeah. Why didn't you pursue for the career that Nazneen wanted to be? Well, I started my career as an advocate. In the beginning, I was, a litigator. I obtained my license from lower courts and then higher courts. I was working at courts. I have 5 years experience at working at courts. But then it was just civil court experience, or did you move to some other courts too? Basically family courts and civil courts, but obviously criminal courts, because for the initial intimation you need to have a greater experience of all courts. So yes, I obtained that. So Nazneen, you're an art lover too. Yeah. मैंने कहीं पढ़ा है कि आर्ट रूह की ग़ज़ा होती है. आपको क्या लगता है कितनी सच्चाई है इसमें? बहुत ज़्यादा सच्चाई है.
इसमें बहुत ज़्यादा सच्चाई है। बस एक मसला है कि जब लोग कहते हैं कि आर्ट रूह की ग़ज़ा है, तो बेसिकली कह दिया जाता है म्यूज़िक रूह की ग़ज़ा है। इट्स नॉट दैट लिमिटेड कॉन्सेप्ट, यू नो। आपकी रूह को हर चीज़ चाहिए होती है, सेरेनिटी चाहिए होती है, और सेरेनिटी उस वक्त तक नहीं मिलती कि आपको सारे कलर्स ना मिलें। सो यू नो, पेंटिंग्स एंड photography and music and art, everything is a part of, you know, it's a part of you. आप उसके बगैर इनकम्प्लीट हो अगर आपने अपने आर्टी साइड को इग्नोर कर दिया तो। सो नाज़नीन, जैसे अभी आपकी आर्ट साइड का हमने डिस्कस किया, आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग में भी रही, आप एक ट्रेनर भी हैं, आप एक कंसल्टेंट भी हैं, और आपका पब्लिकेशन हाउस भी है। कैन वी डिस्कस मोर अबाउट द पब्लिकेशन हाउस? Yeah, sure. Actually, yeah, I was there when I was telling you that my husband needed a product so that he could sell it. He could do miracles in marketing. You know, he is a very good marketing person, but he needed a product. So I decided to make one, and something very unique, very different that no one else could compete. So I started studying medicine for a change. I was a lawyer, but I was studying medicine. I did short courses with WHO and other organization because I wanted to bring an international standard into local markets. And I did that. My book Pharma Plus is all about the medicine which are available in Pakistan with the information on international standard and dosage guide. So what is your greatest challenge as an editor-in-chief? Well, being a woman, it is quite difficult to be the head of the company. Like people came asking, why not your husband? Why you are the chief? Why you are the owner of the company? Why you are doing everything? Why not your husband? And I kept telling them that everyone has their own abilities, you know. Not everyone can be an author, not everyone can be a good writer, and not everyone can be a good salesperson. So I have my own domains and my husband has his own domains. So that was the basic challenge. The second challenge I faced, people criticized me कि जी आपने तो लॉ पढ़ा था, फिर आप मेडिसिन की बुक कैसे निकाल सकते हो? आप डी फार्म तो नहीं हो, फिर आप मेडिसिन पे काम कैसे कर सकते हो? So Nazneen, you turned this all criticism into a positive thing. Yeah. And you just showed that Nazneen can be a lawyer too, Nazneen can be editor-in-chief too, Nazneen can be, you know, the trainer as well. But with all these things, Nazneen is a mother. Yeah. Nazneen is a wife, Nazneen is a daughter, I would say. So Nazneen, आपको क्या लगता है कि ये इतने सारे जो काम है Nazneen all together कैसे मैनेज करती हैं? देखिए फरजाना, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे सारे रंग हैं। अगर मैं किसी एक रंग पे फोकस करती हूँ तो मैं अपने साथ ज्यादती करती हूँ। मैं ये समझती हूँ हर इंसान, मर्द या औरत, अपने सारे रंगों को एक्सप्लोर करो। मतलब हर इंसान एक बच्चा भी होता है, एक पेरेंट भी होता है, हर इंसान की सोसाइटी से भी होती हैं, उसके अपने पैशन भी होते हैं। तो यू नीड टू एक्सप्लोर योरसेल्फ, यू नीड टू डू व्हाट, आपको अपने आप को चैलेंज करना पड़ता है। आप किसी ऑब्स्टिकल को अपने लिए चैलेंज लो। अच्छा ये आ गया, फॉर एग्जांपल जब मेरे हस्बैंड का फैमिली बिजनेस से कट ऑफ हुआ तो इट वाज a big tragedy for him, but I took it as a challenge. It was a challenge that yes, I can do better. The family people over there were saying it was a dialogue, कोई माई का लाल ऐसा काम नहीं कर सकता जो हम करते हैं। And I decided to say माई का लाल कर सकता है कि नहीं पता, पर माई की लाली करेगी। So that's great. That's the spirit. That's a the great spirit. spirit. You can achieve something. So Nazneen, ये जो बहादुर खातून मेरे सामने आज बैठी हैं और जिन्होंने challenges को as an opportunity लिया, and she turned every single opportunity into success. What is happiness for her? Happiness is an ongoing thing. And it comes from inside. अगर आप अपने आप से खुश हो तो आप खुश हो।
इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको अचीवमेंट मिली कि नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता आपके गोल्स पूरे हुए कि नहीं. As far as you are happy with yourself, you are happy. Sometime आप कोई एक quiet moment में बैठे होते हैं, but you are happy from inside. So that's it. Happiness is all about you. Yes, it's a beautiful conversation, Nazneen, with you. Time गुजरने का पता नहीं चल रहा, but time रुकता नहीं है, आपको पता है, और हमें इसको खत्म करना. So let's come to the last portion of this interview today, and that is give any message to the youth or women entrepreneurs. Okay, so basically I would like to address the women. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी क्या एबिलिटी हैं, आपकी क्या चैलेंजेस हैं लाइफ में. आई एम श्योर आपके पास बहुत सारे चैलेंजेस होंगे. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी एजुकेशन है कि नहीं. आप इससे ही देख लें कि मैंने लॉ में एजुकेशन ली पर मैं बिज़नेस मेडिसिन की इंफॉर्मेशन पे कर रही हूँ. सो मेरा आपको ये एक मैसेज है कि अपने आप को लिमिट ना करो. फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों की विमेन का ये कॉन्सेप्ट होता है कि जी शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब हम कुछ नहीं कर सकते. तो इसका मतलब है यू आर अ फेलियर, यू आर अ लूज़र. क्योंकि शादी होना और बच्चे होना इट्स अ नेचुरल ऑनगोइंग प्रोसेस, हर किसी के साथ होता है. पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने आप को एक्सप्लोर ना करें, आप नए एवेन्यूज़ ना ढूंढें, कुछ नया ना करें. मुझे लगता है आपको हर दिन एक नया काम करना चाहिए. और मुझे लगता है कि आप किसी चीज़ को बैरियर ना बनाएं, ना लैंग्वेज को. आपको इंग्लिश नहीं आती कोई बात नहीं, आपको जो लैंग्वेज आती है आप उसी पे रहें. आपकी पढ़ाई नहीं है, आपकी पास डिग्रीज नहीं है, आपको मौके नहीं मिले आगे डिग्री हासिल करने के. हर किसी को नहीं मौके मिलते शादी के बाद और बच्चों के बाद पढ़ने के. आई अंडरस्टैंड, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट, बट माई पॉइंट इज़ एक्सप्लोर योरसेल्फ. आपकी क्या स्किल्स हैं, आप क्या कर सकते हो, क्या ऐसा नया है जो आप कर सकते हो और अपने आप को मनवा सकते हो. यू नीड टू डू दैट. सो टू द यूथ मेरा मैसेज ये है, पेरेंटल लव को कभी इग्नोर ना करो. पेरेंट्स का लव वाहिद लव है जो अनकंडीशनल होता है. आप कुछ भी कर लो, वो खफा हो जाएंगे, आपको पनिश करेंगे, लेकिन आपसे लव करेंगे. उनको कभी इग्नोर ना करो. मैंने एक ऐसे बाप को कोर्ट्स में खड़े रोते देखा है कि एक तरफ उसका भाई का मर्डर हुआ था और एक तरफ उसका बेटा मर्डर था. वो अपने भाई के लिए गवाही दे रहा था कि मैंने अपने बेटे को मर्डर करते देखा है. कोई जायदाद वगैरह का झगड़ा था. डिटेल्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट. द इम्पॉर्टेंट इज़ द इमोशन ही वॉज गोइंग थ्रू. एक तरफ उसका भाई था, एक तरफ उसका बेटा था. वो अपने बेटा के लिए परेशान था कि मेरी गवाही की वजह से वो जेल जा रहा है, और वो अपने भाई के लिए परेशान था कि अगर मैंने गवाही नहीं दी तो क्या क़यामत के दिन क्या जवाब दूंगा. तो आप इसमें उस बाप का अनकंडीशनल लव देखें. तो पेरेंट के लव को कभी इग्नोर ना करो. ये मेरी एक मैसेज है. Thank you very much, Nazneen. It was a beautiful conversation. We are quite privileged to have you over here. And आपकी thoughts share करने का बहुत शुक्रिया. Oh, I'm so happy that I'm here with you.